Now we will go through the tribes of India. Indian Geography lecture on tribes of India by me. Hope the voice and video both are coming good to all. प्रथम the tribes of India रे देखिवा को प्रकार question आसे. They will ask you which of the following tribe is the largest tribes of India. Who are the most vulnerable tribes of India? Like this. That answer देखिवा. Tribes ताले कौन? ये गोटे social division. It's a what? Social division. Traditional society को ले जो मने की मने जेमती की इंडियन सोसाइटी को हमें को ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी को हमें विलेज लेवल को कहू साधारणतः वी टॉक अबाउट द विलेज लेवल सोसाइटी एज द ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉट द सिटी व्हाट सोसाइटी दैट वुड नॉट बी ए ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थे सोशल लिंक था इकोनॉमिक रिलीजियस ब्लड टाइज था है ना एंड डायलेक्ट तांकर यूनिक डायलेक्ट था डायलेक्ट अर्थ कौन डायलेक्ट इज नॉट लैंग्वेज कॉमन कल्चर था जमती ट्राइबल लोक मैंने दे विल हैव देयर ओन कल्चर है ना सिंगल कल्चर दे विल हैव व्हेन आई से डायलेक्ट मीन्स व्हाट डायलेक्ट मीन्स सिंपल ये गोटे स्पोकन लैंग्वेज बट आपको डायलेक्ट ताले तुमको सर एठी डायलेक्ट काई लिखा छी एग्जैक्टली डायलेक्ट और कोन थे स्क्रिप्ट न थाए है ना डायलेक्ट और स्क्रिप्ट न थाए बट लैंग्वेज रे स्क्रिप्ट थाए फॉर एग्जांपल संबलपुरी हे गला ये सब कोन ओडिया रे लिखा होची ओडिया रे स्क्रिप्ट अछि बट संबलपुरी रे किछि स्क्रिप्ट नहीं तो दैट इज व्हाई दे वुड बी डायलेक्ट ताले हम जति ट्राइब रो जे देखिबा एमान कर कोन थे ट्रेडिशनल हम कहबा कॉमन कल्चर था दे आर हैविंग कॉमन कल्चर पोजेसेस सर्टेन क्वालिटीज तांकर पॉलिटिकल आइडेंटिटी था जेमते ग्राम सभा वगैरह आकु कहा जे मेल्टिंग पॉट बोली ये क्वेश्चन मन रखो दिस कुड बी योर क्वेश्चन मेल्टिंग पॉट India has been described as the melting pot of races. Of what races? Why? Because of and tribes. कारण melting pot एथिपाई because of the all type of religion, all type of races you can find in India. ना इंडिया को कहा जाए melting pot रो meaning यदि आउट के मु डेप्थ रे जाई कि तुमको melting pot रो meaning बुझाइबी. Let's say इंडिया रे negroid देखा जबो, इंडिया रे Mongolian देखा जबो, इंडिया रे Caucasoid देखा जबो, ऑस्ट्रेलॉइड देखा जबो सबु प्रकार रेसेस डिफरेंट रेसेस इंडिया तुमको देखा जबो सो इंडिया इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट रेसेस जेमती हमर नॉर्थ ईस्ट रे केमती लोक देखा जाउची चाइनीज लोक भले देखा जाउची पंजाब हरियाणा राजस्थान रे को भले लोक जाउची बहुत टॉल लोक देखा जाउ यूरोपियन स्टाइल रो लोक माने देखा जाउचंदी सेंट्रल इंडिया रे केमती देखा होची द्राविडियन स्टाइल देखा होची देन हमर ट्राइबल माने केमती निग्रोइड भले देखा जाउची ताले इंडिया रे सबु प्रकार रेसेस रो लोक रहउचंती सेति में इंडिया को राइटली कॉल्ड एज द मेल्टिंग पॉट ऑफ ऑल रेसेस एंड ट्राइब्स ना बुझा पड़िबनी एबे होप दिस वन इज कंफर्म टू ऑल है ना because all type of races रो हमको एठी देखा जाए and all type of tribes also as well so that is why India is called rightly called as the melting pot. Now according to census 2011 104 million or that to be the 8.6% of the total population of our tribe. This one is very important data. More than 100 million population is our tribal population and MP has the highest tribal population 15.3 million, that is 21% of the total tribal people. Lakshadweep has the highest population 94%. ध्यान से सुनिबो नंबर एंड परसेंटेज बोथ डिफरेंट मध्य प्रदेश होची नंबर 1 येला परसेंटेज वाइज कहले लक्षद्वीप रे जति के लोक मिलंती तार 94% ऑलमोस्ट 95% लोक ट्राइबल लोक द परसेंटेज वाइज लक्षद्वीप बट नंबर वाइज मध्य प्रदेश फॉर एग्जांपल जेमती फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज मिजोरम एरिया वाइज की मध्य प्रदेश द लार्जेस्ट ट्राइब होची भील ट्राइब दिस वन आल्सो वेरी इंपोर्टेंट the largest tribes of India is the Bhil tribes nearly 46 lakhs and the smallest one is Andamani tale ye question pe tum pachar pare largest and smallest the largest one is the Bhil tribe and the smallest one is the Andamani आउ मध्य प्रदेश होची सबटो अधिक ट्राइबल लोक लोचंती परसेंटेज वाइज रहउची तमरो लक्षद्वीप रे 95% तले ट्राइबल माने को शेड्यूल रे असंती शेड्यूल 5 रे असंती ध्यान से मन रखिबो दे आर कमिंग अंडर द शेड्यूल 5 है ना कोथरे आसबो शेड्यूल 5 तांको पई कोन रखा जाईची ना 2006 ट्राइबल प्रोटेक्शन एक्ट बा ट्राइबल राइट्स एक्ट आको कोन कह जे ट्राइबल राइट्स एक्ट
है ना, ये मन रखो 2006 रे कौन आसला ट्राइबल राइट्स एक्ट। ये क्वेश्चन जस्ट 2 days बिफोर यूपीएससी पचारि ज्योग्राफी ऑप्शनल रे ये क्वेश्चन है ना, ट्राइबल ऊपर क्वेश्चन आसी 2006 रो ट्राइबल प्रोटेक्शन राइट एक्ट बा ट्राइबल राइट एक्ट ऊपर ज्योग्राफी ऑप्शनल रे डायरेक्ट क्वेश्चन आसी। ये शेड्यूल एरिया रे जना जाए ना, शेड्यूल एरिया किए डिटरमाइन करे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोटी 5th शेड्यूल रे 6th शेड्यूल रे नो 6th शेड्यूल रे किए गवर्नर। ये तो समस्त पढ़ी आज जाए। आर्टिकल 366 कहले 66 डिफाइंस द शेड्यूल ट्राइब। ताले ध्यान से मरको ये आर्टिकल भी मन रखी थी तो पॉलिटी रे 366 क्लॉज 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु आर द ट्राइब्स। So tribes, if I again go through, the largest tribe of India is the field tribes. And the largest number of population or the people of tribal people, they are residing in Madhya Pradesh. Percentage wise, that is Lakshadweep, Schedule 5 of Indian Constitution, and Article 366 Clause 25 define who are the tribes. Again, I talked about 2006 Tribal Protection Act for the protection of tribals and for the what Land Right Act, also Land Right Act, that is also coming under this particular act 2006. If I go little bit of extent, it would be PESA. Another act is there, PESA, Panchayat Extension Act. That one further also applied to the tribal areas. Again I repeat, PESA Act 1996, PESA Act 1996 also applied to the scheduled areas. That means those area where Panchayat Raj is not applied, in that area PESA will come into the force. That means here the highest decision making body would be the Gram Sabha. It would be Gram Sabha. So it would be your PESA. Now two important, most important acts. Apart from that, if you ask me any other important acts, I will say 1989 Tribal, that is the what Atrocities Act. Tribal Atrocity Act. ध्यान से मन को ये 3टा क्वेश्चन आने चांसेस बहुत है। 2006 ट्राइबल राइट्स एक्ट, 1989 ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट। अर्थ कौन सी लोक जदि जड़े एसटी लोक तुम ताको एसटी कही देइछ ताले ए जो 1989 ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट अनुसार प्रोसीडिंग विल बी प्रोसीड अगेंस्ट यू। अब पेसा एक्ट अनुसार कौन ग्राम सभा जो मीटिंग करती माने कौन हम सेठी, दैट इज द थ्रू द पेसा एक्ट। दैट मीन पेसा इज अप्लाइड टू व्हाट शेड्यूल 5 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। 2006 व्हाट ट्राइबल राइट एक्ट जो थरे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अलाउ करा जायछि ट्राइबल मन को थ्रू दिस एक्ट। 2006 एक्ट ट्राइबल लैंड एक्ट्स ताको कहा जाय ट्राइबल राइट एक्ट्स भी कहा जाय, थ्रू व्हिच माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दे कैन कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट for their economic prosperity, like they can make the bidi out of kendu leaf, है ना, these are the things. So these are the value addition I am doing to your lecture, so that will help to eliminate the option as well as going into the deeper part of that particular lesson. So again, who are the then tribes? So tribes are particularly the communities, they have been residing but in a deep forest, having unique custom, tradition and also relation. Tribal communities schedule 5th रे आसुची तमरो, okay, ध्यान से मन रखिबो, deemed to under the, that means हम कहबा such tribal or the tribal communities are the part of the groups within such tribe, or the tribal communities are deemed under the article 342 of the constitution. Here as a tribal ministry, there is also a ministry for the look after of the tribals. केबे हेतला 1999 रे कोन हला द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को बाइफरकेशन करके अलगा करके गोटे नुआ मिनिस्ट्री हला ट्राइबल मिनिस्ट्री, जे कि ट्राइबल मानकर डेवलपमेंट प्रति ध्यान देबे, एससी एसटीज प्रति ध्यान देबे। गोटे सेपरेट मिनिस्ट्री करला तांको प्रेस्टीज मिलिबो, दे विल गेट मोर प्रेस्टीज, दे विल गेट मोर अटेंशन, दे विल गेट मोर allocation of the fund, they will have proper planning for the development of the SCs and STs, for the socio-economic development of the scheduled and the ST and SCs. Okay, that is the scheduled tribe and scheduled caste people. Those are coming under the but 5th schedule of the Indian Constitution. So tribal ministry, that shall be a nodal ministry. Nodal ministry कौन पे for the policy planning जहाँ भी होगा तांके एरिया development पे, that ministry is the would be done. Then we will come to the PVTC. This question is one of the most important question and expected to be asked in the prelim.
Now, what is PVTGs? The particular vulnerable tribal group. That means they are also called as the tribe within tribes. They are also called as the what? Tribes within tribes. Kale tribal manoko bhitare jo mane sabudu pichhada bargar loko, those who are having very low literacy, they are having poverty, going through the harsh phase of the poverty, a less number of people left, their community is depleting, their population is dwindling very fast. That community people would be known as the what? PVTs, particular vulnerable tribal groups. That is the tribes within the tribes. है ना, ताले ट्राइबल्स विद इन ट्राइब ताको हम कहते पीवीटीजी. ताले सबुठु अधिक पीवीटीजी कोठी रहउची, दैट टू बी ओडिशा. दैट टू बी व्हाट? ओडिशा. ताले हाउ मेनी पीवीटीजीज आर देयर? 75 पीवीटीजीज आर देयर. लेट्स हैव अ लुक. 8% our total tribal population. That through 75 tribal groups have been categorized by the Ministry of Home Affairs. किए करिछि देखो, एटा बहुत इंपोर्टेंट. Ministry of Home Affairs, ट्रैवल मिनिस्ट्री करना हंती है ना, as the PVTs. 18 स्टेट रोची. अब ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आसीथिला. एक मिनट यार, सॉरी. So this question was last year side, if I am not wrong. पचातला केतेटा स्टेट रे PVTs मिले? 18 स्टेट, UTs, Andaman and Nicobar रे मिले PVTs. This is very important. ता भितर ओडिशा ताले तुमको केतेटा 18टा स्टेट एंड यूटीएस अंडमान निकोबार रे तुमको पीवीटीजीस मिले. ताले पीवीटीजीस को किए करती रिकॉग्नाइज करंती? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. केतेटा पीवीटीजीस अछि? 75. पीवीटीजीस कोन ना जो ट्राइबल लोक माने ट्राइब विद इन द ट्राइब कहले सबुठु वनरेबल सेक्शन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन द कंट्री. इज इट फाइन टू ऑल? They have declined, stagnant population, low level of income, literacy, all these things I have already talked. That is why they would be given the vulnerable section of the tribal society. They inhabit in the remote and localities. Remote area रे थांते समाने inhabit है ना, deep jungle, deep forest रे समाने रहने पसंद करते. Then identification. So hope this much is clear to all. Everyone fine with this? Everyone fine with this? बुझा पड़ती सुजाता? फाइन? यस सर. है ना एवरीवन? ये जो लक्ष्मी प्रिया बुझा पड़ुची? यस सर. है ना? तो प्रफुल्ल, प्रियात? हाँ यस सर. हाँ सर. हाँ सर. ना इम्पोर्टेंट जोड़ा एक मिनट फिर कहाँ गए यार हम? एक मिनट. So I was there in tribal section here. Now identification. एबे मु जोटा कहूची ताको सर्कल करूची तुरंत मन को. Devar commission से तुमको पचारबे Devar commission कोन पे आस्थला for the PVTGs. Now this one is very important. They will ask why Devar commission is related to what? This is related to the PVTGs. मतलब who are the vulnerable? In 1975 government of India initiated the most vulnerable tribal groups as the separate category PVTGs. ताले या पे क्या आस्थला गोटे कमिटी कराइतला Devar कमिटी ताको आइडेंटिफिकेशन पई ध्यान से मन रखबा Devar कमिटी. ना PVTGs सबुठ अधिक कोठी highest number of PVTGs is found in Odisha followed by Andhra Pradesh 12. So this question could be the probable question. Out of 75 PVTGs, they are spread over 18 states and 1 Andaman and Nicobar. That is one UT, that is the Andaman and Nicobar. That way in total I will say 19 territories. 18 is their state and 1 is your UT. Odisha is having more PVTGs, that is the 13 number followed by Andhra Pradesh. This could be the potential question. Okay, आगे थिला particular vulnerable group ताकू हमें rename कर देले कौन? PVTGs कर देले. Particular vulnerable groups कर देले. Criteria कौन? कहा को हमें PVTGs बोली कहिबा? What is the criteria? Criteria हम कहली literacy कम थिवो, population बहुत कम थिवो, population बहुत ही जल्दी decrease करूची, income level बहुत कम, remote area रे रहउछंती, technology नाही. ये देखो तुम लिटरेसी बहुत कम, पॉपुलेशन डिक्लाइन करूची, इकोनॉमी लेवल कम, टेक्नोलॉजी नाही. आज भी से माने सही हळ करूचंती, पावर टिलर करू नाहंती, हळ करूचंती है ना. दे आर वेरी रिमोट से माने लोन नहीं रहया भी पसंद करंती है ना, बाहर को आसंती नाही. तो बस है ना, ये हमर ही जो ठीक अछि. दिस आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करतले जोडा कि तुमको आसीबो. आ कोन कोन कहली मु 2006 कोन कहतली ट्राइबल राइट एक्ट, पेसा एक्ट, पेसा पंचायत एक्सटेंशन एक्ट 1996, आउ कोन कहथि ट्राइबल एट्रोसिटीज एक्ट 1989. These are the important acts related to the tribal
So you have to remember apart from कोन आउ ट्राइबल जदि तुमको सर ट्राइब्स आउ कोन ट्राइफेड आउ कोन आसीबो ट्राइफेड ट्राइफेड है ना तले ट्राइफेड कोन ना ये मार्केटिंग एजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइफेड ट्राइबल जते प्रोडक्ट अछि ताकू बिकिबो ताकू एडवर्टाइज करबो कि ट्राइफेड है ना ट्राइफेड कथा मन रखिबो सो ताले पेसा ट्राइफेड फॉरेस्ट राइट एक्ट देन तमरो व्हाट फॉरेस्ट राइट एक्ट then tribal atrocities act. These things you must be remember है ना ये सब जोटा वैल्यू एडिशन कर दउची मु ताकू भी मन रखिबो स्लाइड रे so that this thing will work for you. At least essay लिखि परिबो मेंस रे आंसर लिखि परिबो prelim करि परिबो chances is there. This is up to you how you are taking and perceiving the things. एमते नै कि किछि वेस्ट तो जीवनी पक्का. The most famous tribal group होची भील है ना देखो most famous. So भील are the mostly found in the mountain of उदयपुर राजस्थान. तो राजस्थान रे देखा जे भील ट्राइब तुमको जदि पचारो भील ट्राइब कोड देखा जबो ताले होची राजस्थान रे देखा जबो. Which is the largest tribe of India? Also the भील. The largest tribe in India is the भील tribe. हमको वाचे bowmen यानी popularly known as the bowmen. देन सो गोंड ये तो ओडिशा रे देखा जाए ओडिशा आंध्र प्रदेश से पूरा रीजन रे देखा जाए है ना छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश ओडिशा महाराष्ट्र बिगेस्ट ट्राइब सेकंड बिगेस्ट ट्राइब व्हिच इज गोंड एंड ओडिशा रो लार्जेस्ट व्हाट गोंड ट्राइब द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट ऑफ ओडिशा सेकंड ऑफ इंडिया भील ट्राइब इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया एमन को ऑक्युपेशन एग्रीकल्चर व्हाट एग्रीकल्चर देन यात्रा करछन्ते माने केलसापुर एंड माताई बेसिकली फेस्टिवल वगैरह से मन करंती. देन बाइगा ट्रिप ए पीबीटीजीस ये देखो पीबीटीजीस ओडिसा रे देखाउची बिहार मध्य प्रदेश ए सब रही सो पीबीटीजीस एटा मन रखो इंपोर्टेंट बाइगा ये तुम पचरो व्हील इज ए पीबीटीजीस नो गोंड इज ए पीबीटीजीस नो बाइगा इज ए पीबीटीजीस दे आर माने बहुत बैकवर्ड नोमैटिक लाइक इट इज देखाइछ ना सेमी नोमैटिक लाइफ. बांबो प्राइमरी रिसोर्स अछि इंटीग्रल पार्ट है ना टाटू करिवे माने बॉडी रे. देन सो मुंडा ट्राइब छत्तीसगढ़ ओडिशा बंगाल ए सब तुमको देखा जो मुंडा ट्राइब. देन सांथाल ये बहुत इंपोर्टेंट वर्तमान ये पचार चांसेस अछि बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ना तो सत्ती पाई तुमको पचार सांथाल कम्युनिटी बिलोंग्स करते से वेस्ट बंगाल झारखंड ओडिशा आसाम इन दिस रीजन द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड एज वेल and she is also belongs from the Odisha. So tribal jehetu as the prime president of India is belong to a such community. So this year gote question ame expect करूचे tribal रो आसीबो जेमिति की UPSC मेंस रे पचारि सारिची. UPSC मेंस रे tribal diversity मेंस रे एथ रही जो 2-4 दिन तळे tribal diversity ऊपर गोटे 10 मार्क्स रो ना 15 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी सारिची. कारण जना थिला एटा आसीबो जेहेतु प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तमरो ट्राइबल सेक्शन रो आसुचंदी. तो एथरो भी तुमको प्रीलिम रे भी कोनोसी एग्जाम दबो तुमे लास्ट मतलब कमिंग 2 इयर्स है ट्राइबल रो गोटे क्वेश्चन आसीबो. ईदर दे विल आस्क यू द 2006 एक्ट ईदर दे विल आस्क यू 1996 ईदर दे विल आस्क यू 1989 ईदर दे विल आस्क यू ट्राइफेड ईदर दे विल आस्क यू ट्राइबल मिनिस्ट्री नॉलेज से तुमको 5th शेड्यूल पचारिबो नॉलेज से तुमको 6th शेड्यूल पचारिबो है ना. पीबीटीजीस केते अछि केते ट्राइबल अछि टोटल पॉपुलेशन रो केते परसेंट जेंति 110 मिलियन सब देखिले 8.9% ऑलमोस्ट. तो एमते सु तो किछि भी क्वेश्चन आसी परे बट आसीबाटा पक्का क्वेश्चन आसीबो. सो दे आर व्हाट देखो ये तुम सांथाल कथा देखो हाँ प्लस दोज हु वर द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द सांथाल और फ्रॉम एनी ट्राइबल जेमति से तुम बिरसा मुंडा हे गला एमान को विषय भी पढ़ी जीवो कारण ये आसीबार चांसेस अछि. बिरसा मुंडा वगैरह जेते तो ट्राइबल रिलेटेड जहां भी अछि माइनर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोन ये सब तुम पूरा ट्राइबल को भल से पढ़ी जाओ कारण योजना रे भी ए मासरे ट्राइबल आसी लास्ट मंथ रे योजना रे भी आस्तला बिकॉज डेलिबरेटली गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग दिस वन के ट्राइबल ऊपर तमरो अवेयरनेस बढ़ू है ना. तो ट्राइबल स्कीम कौन कौन अच्छी जमी तुम कौन अच्छी तुम एकलव्य स्कूल हो गला ये सब जिते स्कूल अच्छी है ना जिते तुम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जहाँ सब दिया ट्राइबल मानू ताकू भी तुम पढ़ी जीव बुझा पड़ोनी. सो दिस थिंग्स यू नीड टू बी अवेयर योरसेल्फ
because they are going to ask you the question. But from where they will ask, I don't know. I am just giving you the scope and the areas what to cover. Then comes to the Meena, one of the largest tribe, Meena, Rajasthan and Madhya Pradesh. So Meena, mythological the descendants of what? Matsya avatar, माने जो fish है ना, Meena tribe. राजस्थान में बहुत देखा जानती है Meena tribes. Then Toto tribe. This one is very important. West Bengal, Toto tribe. बस तुमको कोठी कोटा मिले साधारणतः सांथाल टिके इम्पोर्टेंट पढ़ी जीवो कारण सांथाल माने जेंती 1857 रे युद्ध करूथले ब्रिटिश विरुद्ध रे सेथुर तमरो प्रेसिडेंट निजे आसुंदी से कम्युनिटी बिल्डिंग करती तांकर कोन लैंग्वेज सांथाल फेस्टिवल कोन कोन हुए जहां भी हुए ताको पढ़िबो बोडो ट्राइब आसाम नागालैंड वेस्ट बेंगल एठी देखा जीवो तुमको बोडो लैंड पई से माने डिमांड करछंती जानि छ तमे ना बोडो लैंड पई ना जानना कथा एवरीवन होप एवरीवन अवेयर ऑफ द फैक्ट बोडो Angami tribe in Angami, that is the Nagaland. Kohima देखा जो Angami tribe. Regmans tribe, that is in Nagaland again. खाली हमें देखिबा कोना important tribe कोठी कोन. Then Kwang tribe again in Nagaland. Kwang tribe. Here is one image of the Kwang person having tattoos. Bhutia tribe. Sikkim, this is both important. Sikkim Bhutia tribe. Bru tribe, again it's in Mizoram and Assam. Chakma, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh. Chakma, this one also. Then Lepcha tribe. सिक्किम लेप्चा ट्राइब सिक्किम को रूल करूथले लेप्चा किंगडम सिक्किम भूटान ए सब रीजन रे देखा जिवो खासी तो जानचो गारो खासी जयंतिया मेघालय तो मते कहय पड़िबनी एंड खासी इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मेघालय गारो खासी जयंतिया है ना देन गारो ट्राइब तो जानिचो गारो खासी जयंतिया मु तको देखोनी then Nisi tribe of Arunachal Pradesh. Gadi tribe, बाकी एगुला दरकार छोट गुज्जर तो जानचो जो राजस्थान ये सब रीजन रे देखा जाए पंजाब हरियाणा गुज्जर ट्राइब गोरु गाई चरांते माने खास करी ओरली कोठी देखा जाए तुमको महाराष्ट्र ओनली पेंटिंग अछि ना तो सुनथो ओरली पेंटिंग महाराष्ट्र से ओरली ट्राइब महाराष्ट्र गुजरात एमपी रे देखा जाए ये देखो ओरली पेंटिंग here you can see the ओरली पेंटिंग as well ओरली पेंटिंग as well so ओरली folk art dancing थे फेस्टिवल थे so ओरली tribe from the Maharashtra painting also बहुत important painting tribal painting ओरली painting from Maharashtra they may ask you ओरली painting found in which part of the India then Khond and Dongri, Odisha. So these are also PVTGs, Khond and Dongri types. They are also very important. Their own written language, script ne Odia script. That means that would be, but Dravidian language written in Odia script. खाली हमें लोकेशन देखे जाओ जे, है ना? Then Chengchu tribe, that is Andhra Pradesh. Chengchu tribe, Andhra Pradesh, Nalamala hill रे देखा जाओ. Nalamala hill itself the part of Eastern Ghat. Then Toda tribe टिके देखि दरा important अछि बाकी आउ छोटो मोटो tribe देखिबानी हमें then Kadova this is not important tribe Toda tribe ये तुमको देखा जो कोठी नीलगिरी देखा जाए नीलगिरी वाइस पे रिजर्व भीतर रुहंती Toda tribe तो आपको important मन रखिबो जेमति आउ गोटे अछि हमर कोन that is Simlipal रे की अछि Mankidia tribe Simlipal रो अछि Mankidia tribe तो सेटा मन रखो Simlipal रे these are the important tribes हमें देखे देले here is the Airula tribe in Nilgiri again in Tamil Nadu Nilgiri देखा जो Airula tribe so they are having bow in their hand you can see the bows
what this tribe is. Katu Nayakam, king of the jungle. Kerala, Andhra Pradesh, these are the region. Then Great Andamani, here you can see the Great Andamani. Andaman Nicobar तुमको दिखेगा Great Andamani. Then Om tribe also in Andaman Nicobar, nomadic. That is the what nomadic, hunting and gathering. ये भी तुमको से दिखेगा जो Om. Sompen, again this one is important tribe. Sompen tribe, hunting and gathering. ये भी तुमको कोटी दिखा जो that would be in Andaman Nicobar. Andaman रे दिखाया है Nicobar तो no Andaman. It would be in Andaman. Sompen in Andaman. Sentinels, Andaman. World last uncounted people. World last uncontacted people. One of the most inaccessible land बोली कहा जाए आपको Sentinels, है ना? So they are inhuman basically. Then Jarawa tribe, again Andaman Island रे देखा जो Jarawa tribe. So these are the tribals of the tribes of India. That means हमें important tribes देखेले, tribal right acts वगैरह तो हमको कहते हैं PVTGs. We have gone through the PVTGs as well. So these are the tribals. Are move send करते हुए तो material. Don't worry. Now we will go through the monsoon of India. So tribal रे हमें कौन पढ़िले हमें फटाफट discuss कर दूँचे. Tribal रे हमें पढ़िले like what. Kahingi tribal padhiba important because of the president. Rightly as I said. So important things is the 5th schedule. You have to go through the 5th schedule. You have to go through the 6th schedule. Then you have to go through the Tribal Rights Acts 2006. You have to go through 1996 PESA Act. You have to go through 1989 Tribal Atrocities Act. Then what you have to go through PVTGs. Who are the PVTGs? Their list, their distribution, total tribes, then largest tribes, smallest tribes, then trifid हेगला trifid रो काम कोन minor forest produce कोन minor forest produce तारो list बाहर करिवो then trifid तारो काम कोन. So these are the NAFED रो काम कोन. These are the things you have to go through the tribal point of view. Right everyone? Now we will go through the monsoon mechanism. So mechanism रे तो हम तो prelim point of view रो देखिबा खाली important keywords. See, monsoon what is coming from the monsoon, that is the reversal of season. Monsoon कहले reversal of season, reversal of wind, reversal of season or reversal of wind को कहा जाए monsoon. ये गोटे कोन, this is a Arabic word जार meaning होची season change हबो, है ना. So तमे कहबा ये किए Arabian traders माने देथिले ना. So monsoon को हमें कहो large scale of sea breeze and land breeze भी हमें कहो. Monsoon साधारणतः 20, that means if I draw a world map like this 0 degree, 20 north, 20 south. In this particular region monsoon will be prevail. तो monsoon साधारणतः both latitude रो 20 भितर देखा जिवो. Monsoon टा कोन, monsoon होची गोटे secondary wind. ये भी मु पढाइथिले आगुरु. Seasonal wind किए जेते तमर trade wind हेगला, जेते jet stream हेगला, they are the primary winds, है ना. Monsoon होची गोटे secondary. Those wind change its pattern ताको कहा जाय secondary wind. जो माने change करे नाही वर्षो सारा गोटी direction रे जाय सेमन को कहा जाय primary wind. For example, let's say trade wind. Trade winds are flowing like this throughout the year. They are moving like this throughout the year. But monsoon कोन ना हमर northeast monsoon असले wind एमती आसबो, southwest monsoon हले wind will flow like this, है ना. तो wind pattern change होची इंडिया रे. So जदि मु देखिबी during the southwest monsoon the wind is coming from southwest, northeast हले northwest टू आसुची. So wind change होची, wind direction तण करी आकु कहजे seasonal wind pattern. Monsoon रो meaning कोठु आसी monsoon word रो आसीची. So word is, you can see, that is the monsoon. Now northeast monsoon and southwest monsoon, two monsoon हमरो दीटा monsoon थाई. गोटेला summer monsoon, गोटेला winter monsoon. Winter monsoon को हमें कौन को northeast monsoon is going to set in October. तो October रू start ही जीवो.
बर्तमान आमर विड्रॉल करुच्ची किए साउथ वेस्ट मॉनसून ताले मॉनसून फॉर्मेशन रो किए हेल्प करुच्ची मॉनसून फॉर्मेशन रो हेल्प करुच्ची टाइबेटियन प्लेटू साइबेरियन प्लेटू ये सब ना गुड़ा खाली देख जे तुमको कह वेदर साइबेरियन प्लेटू इज हेल्पिंग बिल्कुल हेल्प करुच्चे एतर किसी डाउट नहीं बट प्रिलिम रे आमे ताको तो लॉजिक देखिया नेबे एमे देखबा देयर आर मेन रेस्पोंसिबल कौन पई मॉनसून हुए मॉनसून पई आमे देखबा वास्ट साइज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एडजेसेंट एरियाज कहले आखा पखा जे एरियाज अछि हमरो ताको हमें एडजेसेंट एरिया बोली कहूचे तो आम पाखरे कोन होची बहुत बड़ गोटे हमरो लैंड मास अच्छी एक मु गोटे फिगर को जाऊँगी से फिगर ही पढ़ाई देवी ये फिगर ही पढ़ाई देवी कॉन्सेप्ट एठी ही तुमको खत्म कर देवी एठी मॉनसून मु पढ़ेबी बस तुम मैंने खाली पेशेंसली शुणी दियो हो से बाकी से स्लाइड देखोनी मु स्लाइड रे लेट हबो नाउ हियर इज द साउथ वेस्ट मॉनसून ये होचे तमरो साउथ वेस्ट मॉनसून ये होचे साउथ वेस्ट मॉनसून ना ये होचे हमरो नॉर्थ ईस्ट ये होचे this one is northeast monsoon this one is northeast by winter and this one is summer this one is your summer one एक मिनट साउथ वेस्ट मॉनसून केते बेले आसे साउथ वेस्ट मॉनसून जून फर्स्ट वीक सो इट वुड बी जून फर्स्ट वीक रे आसे ये तो समझते जानी छ जून फर्स्ट वीक रु अप टू अक्टोबर ना एबे सेप्टेम्बर 17 रे ध्यान से मन केबो 17 ऑफ सेप्टेम्बर साउथ वेस्ट मॉनसून विड्रॉल्स फ्रॉम राजस्थान रु विड्रॉल करे बट ए वर्ष 2 दिन लेट रे विड्रॉल कला 19th ऑफ सेप्टेम्बर ताकू विड्रॉल करिया पे 1 मंथ लागिवो दैट मींस मिड ऑफ अक्टोबर हेजो ऑलमोस्ट अक्टोबर 10 हेजो पूरा कंप्लीटली विड्रॉल करिया पे मॉनसून को येला विड्रॉल ऑफ मॉनसून ना तुमको सर विड्रॉल ऑफ मॉनसून काहे कि वे बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर डेवलप्ड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सेठी कोन करबो हाई प्रेशर डेवलप हे गेले मॉनसून विड्रॉल करबो ये तो थिला विड्रॉल ऑफ मॉनसून एबे देखबा स्टार्टिंग ऑफ मॉनसून काहे कि आसे इंडिया को मॉनसून साधारणतः समर सीजन रे ही आसे दैट मींस इन समर सीजन मॉनसून आसे कोन पई बिकॉज दैट टाइम सन रो प्रेजेंस था सदर्न दैट इज व्हाट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन प्रेजेंस रहइबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून 23 कथा भाबो जाको कहचे हम समर सॉलिस्टाइस ना व्हेन इट वुड बी जून 23 और जून मास मु कोनी जून 23 बोली जून मास रे तमरो सन रहबो कोठी सन वुड बी इन सदर्न हेमिस्फीयर जाको हम समर सॉलिस्टाइस बोली कहूचे तो जून जदी दैट मींस मोर जो आईटीसी जेड अछि ITC Z will shift to over India. एठी देखो तुम्हारा ITC Z over India लिखाई छी over India ITC Z will come to over India. ITC Z रो काम कोन मीटिंग ऑफ टू डिफरेंट एयर मास को दी एयर मास वन होची साउथ वेस्ट सॉरी नॉर्थ ईस्ट वन होची साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट सो गोटे रे हमरो साउथ ईस्ट मंथ ट्रेड विंड आउट रेबो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ये दीटा मीटिंग करे कोठी ITC Z फॉर्मेशन करे और ITC Z टा कोन करे माइग्रेशन करे केबे जेतेबे सन चौठी रहइबो ITC Z सेठी रहइबो दैट मींस व्हेन इट इज जून सो ITC Z विल शिफ्ट ओवर इंडिया or it will station over India. That is why the wind from the southern hemisphere they will comes to India or they will attract towards the India. Why? तुमको सर कौन पैसे because ITC Z itself a low pressure area. Itself a what low pressure area that is the meeting area of two different air mass. One would be northeast and one would be southeast. But trade wind. These two trade wind they will meet over ITC Z ऊपर भेटिबो so that this one is a low pressure area. ये गोटे कोन this one is a low pressure area. This ITC Z is a low pressure area which will attract the air mass from the southern hemisphere. जो हमरो southern hemisphere रु एक कोन air mass को attract करबा it will attract the air mass from southern hemisphere. From what? Southern hemisphere. It will attract the air mass from the southern hemisphere, right? Now, तल तुमको ITC Z केते डिग्री रहले मानसून हो? If ITC Z is 15 degree over India, this one is very important. When ITC Z is 15 degree over India, that time monsoon onset will happens over Kerala.
तो मॉनसून कोडी केरला बट केरला पूर्वरु निकोबर रे फास्ट टच करे अंडमान निकोबर ध्यान से मन रखबो मॉनसून फास्ट टचेस द अंडमान एंड निकोबर आइलैंड then Kerala. So mainland of India hochi Kerala, but overall Andaman Nicobar. Why? Because of the latitudinal extension of Andaman Nicobar, that is the 6 degree, but whereas the Kerala is what 8 degree to 9 degree. Obviously 6 degree will touch fast the by the monsoon. Hope this one is everyone can get me from that particular point. This one is good to all. And now if that means हम देखबा तमर केरला रे मानसून ऑनसेट करे केबे जून मास रे देन धीरे धीरे हम कहबा जुलाई 15 सुधा बाय द हम कहबा जुलाई 15 so it will completely cover whole of India by July 15 whole of India will completely cover तो एक पूरा गोटे मास लागिबा तको whole India को कवर करे अपनी केरला रे एंट्री कला परे it will take 1 month to cover whole of India पूरा होल ऑफ इंडिया को कवर करे भी 1 मिनट एक मिनट यस सो होल इंडिया को कवर करे भी 1 मंथ लागो पूरा 1 मंथ लागो होल इंडिया को कवर करे भी तो मानसून पाई जदि तुम पचर को फैक्टर रेस्पोंसिबल फैक्टर तो बहुत सारा अछि तो मु तुमको प्रीलिम पई केवल कहूची कि जून मास रे ऑनसेट करे जून मास साधारणतः फर्स्ट वीक ऑफ जून it will enter in Kerala पूर्व अंडमान निकोबर केते डिग्री सेत्र आईटीसी जेड था 15 डिग्री धीरे धीरे आईटीसी जेड मूव करे टुवर्ड्स द नॉर्थ एमती मूव करी जीवो केते डिग्री जे आईटीसी जेड जीवो 30 डिग्री मैक्सिमम तो आईटीसी जेड मैक्सिमम 30 डिग्री जीवो केबे जे कि 30 डिग्री पहुंचबो इट वुड बी इन जुलाई एंड हेंस होल ऑफ इंडिया विल कवर अंडर द मानसून होल ऑफ इंडिया विल कवर अंडर द मानसून रे कवर हे जीवो है ना तो पूरा कवर हो तो मानसून रो दीटा ब्रांच थाए गोटे होची अरेबियन ब्रांच गोटे होची बे ऑफ बंगाल ब्रांच जदि तुमको पचर सबटू स्ट्रांग ब्रांच कोन दिस वन इज द स्ट्रांग वन एंड दिस वन इज लिटिल बिट ऑफ वीक मु कभी वीक वन कि दिस वन बे ऑफ बंगाल ब्रांच होची सबटू स्ट्रांग एज कंपेयर टू बट सॉरी अरेबियन ब्रांच इज मोर स्ट्रांग एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल ब्रांच तुमको सर कोन पई ना बिकॉज ऑफ the perpendicular striking of the air mass. Here you can see air mass is going and coming and striking lagbhag perpendicular se strike karuchi. It would be like this. So that is why more it would be strong wind. Here would be strong wind. Okay. So because of the perpendicular striking of the air mass. तेणु करी केरला रे अधिक रेनफॉल हुए ना जदि तुमको आज गारो खासी जॉइंट रे कहीं अधिक वर्षा हुए बा जो हमर मौसीराम रे बिकॉज ऑफ फॉनल शेप बिकॉज ऑफ व्हाट फॉनल शेप ध्यान से मन रखो बिकॉज ऑफ फॉनल शेप ऑफ माउंटेन ये कथा मन रखो कारण फॉनल शेप अर्थ एमिति शेप रो अछि माउंटेन जेतो एयर टा गला पूरा ट्रैप हो जाए एयर गॉट ट्रैप इन द गारो खासी जॉइंट दिया ये जो माउंटेन एरिया अछि ए माउंटेन रो ट्रैप हो जाए गारो खासी जॉइंट रे ताको कह जाए ट्रैपिफिकेशन ऑफ द एयर और द फॉनल इफेक्ट ऑफ द physical region of that particular region सेति में सबटो अधिक वर्षा दुनिया रे कोठी वे the world wettest place that is the 1200 centimeter mm नो केते centimeter of rainfall can you imagine 1200 centimeters of rainfall देखा जे कोठी कोन गारो खासी जॉइंट that means it would be मौसिराम it would be मौसिराम सबटो world wettest place कौन पई ना फॉनल इफेक्ट दैट इज द मूव फॉनल इफेक्ट कथा कह देली देन केरला तमरे ए रीजन रे केरला पाखरे केते देखो 250 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल देखा जे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया आल्सो 200 प्लस रेनफॉल देखा जिवो अंडमान निकोबार 200 प्लस सेंटीमीटर रेनफॉल देखा जिवो ना एंती रेनफॉल सब कम कोठी राजस्थान थार डेजर्ट आउ कोठी लेह लद्दाख ताले हमर इंडिया रो ड्राइएस्ट प्लेस कोटा जानि छ लेह थान समर को द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया इज लेह
and the hottest place कोटा that is the ये तुमरो राजस्थान रो शायद इट वाज अलवार ही परे देखि दो राजस्थान रो हॉटेस्ट प्लेस है ना कुटानार तो जानि छ तुमरो सबटू डीपेस्ट प्लेस मतलब लैंड ट्रिक कदला रे अछि ना मॉनसून रो किछि थ्योरी देखि दबा क्लासिकल थ्योरी जे सार एडमंड हाले थ्योरी मॉनसून थ्योरी जे तुमको पचारे सार एडमंड थ्योरी का सहित रिलेटेड मॉनसून सहित रिलेटेड एटा को प्रकार थ्योरी एटा गोटे थर्मल थ्योरी धान समन को एको कोन को जे थर्मल थ्योरी बा को को जे सी ब्रीज लैंड ब्रीज थ्योरी बोली को जे बस एते ही प्रीलिम पई दरकार बाकी सी ब्रीज लैंड ब्रीज तुम पढै छी केमिति हुए ना हार्डले कहवा कथा मो एठी बुझाई दउची तुमको तार पढैबे ने जस्ट खाली बुझाई दउची मन सत्य ही तार कांसेप्ट हार्डले कहया कथा जब मॉनसून कहीं की हुए ये कहया कथा जो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड सी दैट लीड टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून सेथि पे मॉनसून होची ना कोन ना टेम्परेचर डिफरेंस ना टेम्परेचर कोन ना वाटर रिमेन कोल्ड लैंड रिमेन हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन सो दैट व्हाट प्रेशर ग्रेडियंट विल डेवलप and the cold air mass will move towards the low pressure hot means what low pressure that will cause rainfall. This is the logic put forwarded by that person. That means this is one kind of what sea breeze land breeze concept put forwarded by this person Edmund Halley, and this is also known as the classical theory of monsoon. That means simple तांको कहा कथा कि because of pressure difference between the water and land due to the specific heat that lead to the formation of monsoon short term कहि then as for recent concept रे हम देखिबा जेमति कि रोल ऑफ टाइबेटन प्लेटू तुम कहि जो आउ को जिंस एमति अछि दे रेस्पोंसिबल रोल ऑफ टाइबेटन प्लेटू रो रोल then upper air jet stream then upper air circulation of polar wall then El Nino La Nina Indian Ocean जो Southern Ocean oscillation ये सब पढ़ाई थी then Indian Ocean dipole ये सब already तुमको पढ़ाई छी Walker sail in Indian Ocean so these are the things गोटे पूरा में गोटे देखिवा role of Tibetan plateau now Tibet को आगे देखा here is the Tibet one of the world largest and highest plateau then से मन कहो Tibet is the world largest and highest plateau okay जानते मन को सो ये प्लेटू समर सीजन रे लो प्रेशर रे कन्वर्ट हो जाए नाउ इंडियन ओशन से तबले हाई प्रेशर थाए दैट मींस हाई प्रेशर रु एयर कोठी की जीवो लो प्रेशर को मझी रे किए अछि इंडिया एंड दैट विल कॉज रेन ओवर इंडिया डन सिंपल सपाट मु कहूची पूरा इजी वे रे कहूची मोते पूरा थ्योरी पढ़ेबर नहीं कने एटा प्रीलिम पे हमें पढुचे नो नीड टू गो इनटू द डीपर थ्योरी पार्ट सिंपल मु कहली के समर सीजन रे वाटर रिमेन कूल है ना सो दैट इट वुड बी हाई प्रेशर Tibet will convert into low pressure because of intense heating so the air mass will flow from high to low and that will cause over India okay ये होची Tibetan plateau रो रोल then role of jet stream हम देखियो role of jet stream image देखो here is the jet stream now jet stream कहले को jet stream subtropical it would be आंसर मन को ये कथा subtropical jet stream not polar jet stream the subtropical jet stream कोन करे ना it flows from west to east मु तुम कहथि jet stream सब west to east को फ्लो करे ओके आको हमें देखि दवा तो subtropical jet stream एठी भी लिखा है देखो that is the what tropical easterly jet stream है ना subtropical jet stream एठी कोन लिखि फर्स्ट सेंटेंस रे देखो subtropical easterly westerly jet बस आको हमें पढियार अछि ना subtropical तुम jet stream कोन करे that will prevail over India ये कौन करे इंडिया ऊपर देखी जाए ना it will prevail over India ये इंडिया ऊपर दे जाए so that कौन करे it will create high pressure ध्यान से मन रखो as long as the jet stream is present over India that will create high pressure तम मुंडो ऊपर दे जदि constantly कौन से गोटे जिंस फ्लो करिवो you will feel tension तमे कौन टेंशन लागो है ना से टेंशन दैट मींस किसी जिंस जब लेट्स से समवन इज स्टैंडिंग हियर ता ऊपर गोटे विंड गोटे फास्ट फ्लोइंग विंड सबले जाउची इट विल पुट प्रेशर ओवर योर हेड सो लाइक दैट ए जेट स्ट्रीम इंडिया ऊपर दे जाउची जेतेबले सेतेबले कोन करे हाई प्रेशर क्रिएट करे एंड दैट हाई प्रेशर हेले तो रेनफॉल होबो नहीं तेनु कर कि ये जेट स्ट्रीम जे पर्यंत निजको विथड्रॉल न करिची फ्रॉम इंडिया by that time there would be no monsoon over India so what the condition we need we need
जेट स्ट्रीम टू बी विड्रॉल फ्रॉम इंडिया जेट स्ट्रीम जदि इंडिया विड्रॉल करके पळै जिवो दैट विल हैपेंस टू द दैट विल लीड टू द ऑनसेट ऑफ मॉनसून दैट विल लीड टू द ऑनसेट ऑफ व्हाट monsoon that will lead to the onset of what monsoon so monsoon will happens once the jet stream withdraw itself to the what north of himalaya that will attract the monsoon se kon karibo monsoon को attract karibo done तेणु करिकी jet stream जो पर्यंत रहिबो से monsoon करइबो नाही बस देन आसबो हमर ए कोन southern ocean oscillation कोन ना ये होची तमरो पैसिफिक ओशन रो दीटा सर्कुलेशन को हमें चेक करू तार गोटे नेगेटिव वैल्यू अच्छी आ गोटे तार पॉजिटिव वैल्यू अच्छी है ना केमिति चल तुमको सर अच्छा एलिनो लालिनो तो समस्ते पढ़ीछ एलिनो बेले रेनफॉल हुए नहीं बास एतिके हम जानचे हुए नहीं अर्थ कोन कम हुए डेफिसिट नाही बोली कहबनी इट वुड बी डेफिसिट रेनफॉल है ना ठीक अछि इंडियन मॉनसून इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द हम देखिबा ताले एलिनो टाइम रे कोन होबे नॉर्मल रेनफॉल रु कम रेनफॉल हुए पैसिफिक ओशन से टेम्परेचर टिके बढ़ी जाए एलिनो टाइम रे टेम्परेचर बढ़ी जाए लालिनो टाइम रे पैसिफिक ओशन रो टेम्परेचर कम जाए तो लालिनो टाइम रे रेनफॉल अधिक हुए आ मु सेटा तुमको क्लाइमेटोलॉजी रे बुझाइथिली तो सदर्न ओशन ऑसिलेशन कोन ना टेम्परेचर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस एटमॉस्फेरिक the seas of pattern of the atmospheric pressure in the eastern and western तो है ना ये कोन ना 2 रु 7 वर्ष जेमति तमरा एलिनो टाइप रो हुए ठीक अछि आकु हुए आ टाइम रे कोन होय दीटा प्रेशर डेवलप करे केतबले अच्छा मु आकु देखैतली बोते समस्त को जति मने थबो तमरो एनीवन ये पढ़ा हितला ना सदर्न ओशन ऑसिलेशन वगैरह वाकर सेल ये देखो वाकर सेल here you can see the Walker cell. Here is the positive part. Here would be cold current देखाउ छिटी एठी warm current. This is the positive Walker circulation. तापर ये circulation उल्टा भी ही जाय पारे एमिति भी ही जाय पारे circulation negative circulation ही जाय पारे तो पॉजिटिव सर्कुलेशन जेतरो थाए इंडिया रे मॉनसून अधिक हबो नेगेटिव सर्कुलेशन कले एयर विल मूव फ्रॉम लाइक दिस वर्तमान ए एमिति मूव करूची सो नेगेटिव सर्कुलेशन एंड पॉजिटिव सर्कुलेशन दैट मींस वाकर सर्कुलेशन कोन एटा होची वाकर सर्कुलेशन एटा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन बस सिंपल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ पैसिफिक ओशन को कहा जे वाकर सर्कुलेशन एटा गोटे एटमॉस्फेरिक सेल जेमति हमें हार्टलेट सेल फेरल सेल पोलर सेल पढ़ी छे एमी सेमति वाकर सर्कुलेशन गोटे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और सेल ओवर पैसिफिक ओशन आर पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज थाई पॉजिटिव फेज एसोसिएटेड विथ लालिना नेगेटिव फेज होची एलिनो बस बुझि परछना बुझा पड़िबो नेबे एवरीवन फाइन तेणु करके आम कहबा जदि वाकर सेलटा कोन अछि ना आमे जदि पॉजिटिव चलीची इंडियन ओशन रे दैट मींस भलो रेनफॉल हबो जदि नेगेटिव चलीची oscillation that would be have less rainfall over India. Okay. Indian Ocean dipole तो हमें already पढ़ी चे ना पढ़ी ने Indian Ocean dipole बिल्कुल मु पढ़ी चे no doubt. Everyone positive this one is the positive phase and जदि एठी water टा cold है जो that would be negative phase. Hope you can remember that one. ये तुमको already पढ़ा है ची. This one is what positive phase एठी लेखा है ची कौन positive. जदि एठी वाटर टा कोल्ड है जबो दैट वुड बी नेगेटिव फेज दैट मीन इंडियन ओशन डाइपोल कोन ना सी सरफेस टेम्परेचर फेनोमेना ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल काहे की कहा जे डुअल पोल पहले वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन ओशन ईस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन ओशन तले कोन डुअल पोल हे गेला जदि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन टेम्परेचर वार्म अछि तले हम तको कहबे पॉजिटिव फेज जदि एठी कोल्ड करंट अछि तले हम तको नेगेटिव फेज ना बुझा पड़िबनी कोन आइला इंडियन ओशन डाइपोल मन पड़ समस्त एवरीवन कुड यू प्लीज आंसर स्पीकर ऑन करिगी सर पढ़ाइला ना इंडियन ओशन डाइपोल सुजाता पढ़ाई नहीं ये सर पढ़ाई थी सर टिके रिमूव नथिले सर मु पर जॉइन ले क्लास तो सेटा देखि देबो ना अच्छा ए तो एलिनो लालिना ए भी हमें पढ़ी थिले सब है ना वाकर सेल तुमको कहि देली भी वाकर सेल देखे ये वाकर सेल कोन सिंपल हमें प्रीलिम पई जानिबा वाकर सेल होची एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ओवर पैसिफिक ओशन तार दीटा फेज थाए जेते बळे एलिनो चलीची एलिनो टाइम रे वाकर सेलटा नेगेटिव फेज रे चले लालिना टाइम रे वाकर सेल पॉजिटिव फेज रे थाए
सो दिस ये जो डायग्राम तुमको देखा दिस वन इज लालिना टाइम रो है ना तेणु करके लालिना हेले रेनफॉल अधिक हम ताले कौन वाकर सेल कौन देख ये कौन लिखे वाकर सेल हम देखीदबा वाकर सेल इज एसोसिएटेड विथ द सदर्न ओशन ओसिलेशन स्ट्रेंथ फ्लक्चुएटेड विथ द सदर्न ओशन ओसिलेशन इंडेक्स द हाईएस्ट पॉजिटिव फेज वुड बी जोन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑस्ट्रेलिया आर्किपेलाग ये कौन रहबो लो प्रेशर रहबो लो प्रेशर रहबो जदि ऑस्ट्रेलिया पाखरे लो प्रेशर ताले कौन रहबो अधिक कौन रहबो पॉजिटिव फेज हम ताकू कहबा दैट इटसेल्फ ए लालिना कंडीशन है ना ये तुमको था इंडियन ओशन द नेचर ऑफ मॉनसून कौन ताले हम देखले इंडियन ओशन डाइपोल कहले कौन सिंपल सी सरफेस टेम्परेचर फेनोमेना ऑफ इंडियन ओशन जदि पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल चली इंडिया रे अधिक रेनफॉल हबो जदि नेगेटिव फेज चली कम रेनफॉल हबो नो रेनफॉल कहबनी डेफिसिट इट वुड बी डेफिसिट रेनफॉल कहा सहित नेगेटिव फेज सहित पॉजिटिव फेज सहित मोर रेनफॉल और इट वुड बी excess rainfall it would be what excess rainfall tale indian ocean dipole kono sea surface temperature phenomena है ना southern ocean oscillation walker circulation ये तुमको सब atmospheric circulation these are what atmospheric circulation somalian jet ना somalian jet कोन टिके देखि देबा ये कोन एक मिनट ये तुमको पचारे somalian jet कोन मानसून फॉर्मेशन रे हेल्प करे तुमको बिल्कुल एठी कौन हुए विंड कौन कहे इंडिया को आसूची साउथ वेस्ट मॉनसून विंड आसूची जो विंड सोमालिया पाखरे आसूची एठी विंड र स्पीड अधिक थाए सेथिमे ताकू कहजे सोमालियन जेट ध्यान मन को एज द विंड स्पीड इज मोर नियर द कोस्ट ऑफ सोमालिया टुवर्ड्स द इंडिया दैट इज व्हाई दैट इज कॉल्ड एज द सोमालियन जेट है ना आ ये जेते स्ट्रांग हबो इंडिया रे मॉनसून सेते स्ट्रांग हबो more stronger Somalian jet, more stronger Indian monsoon. Okay, jet stream कथा मु कहि देछि है ना सबट्रॉपिकल टाइबेटियन प्लेटू रे कोन हबो ना टाइबेटियन प्लेटू मॉनसून फॉर्मेशन रे हेल्प करछि बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर ओवर देयर हिमालय केमति हेल्प करछि हिमालय एठी देखि दउछि अच्छा भाबो टाइबेट रो लो प्रेशर अछि जस्ट इमेजिन एक मिनट जस्ट इमेजिन टाइबेट इज हैविंग लो प्रेशर okay fine Tibet is having low pressure, Indian Ocean is having high pressure, air will move high to low pressure, but in between there is mighty Himalaya. यहाँ को क्रॉस करी तो एयर जाई परिबो नहीं सो टाइबेट रेनफॉल हबो नहीं काना मॉइस्चर तो टाइबेट रे पहुंच परिबो नहीं सो मॉइस्चर विल बी कन्फाइंड ओवर इंडिया विल रिसीव रेनफॉल बिकॉज ऑफ द हिमालय इंडिया वुड नॉट रिसीव मानसून सॉरी टाइबेट वुड नॉट ताले टाइबेट कोन डोंट रिसीव रेनफॉल कोन पे काना हिमालय को क्रॉस करके एयर मास जाई परिबो नहीं so that is why what Himalaya acting as one of the major cause for the southwest monsoon over India. Fine everyone. The nature of Indian monsoon रो nature देखिबा onset कोठी हुए mainland of India Kerala and overall Andaman Nicobar advance करे rain bearing system थे को अगर cloud देखा जाए that would be the nimbus cloud cumulonimbus clouds है ना stratus cloud भी देखा जाए केतरा तुमको stratus cloud but ज्यादातर तुमको nimbus and cumulonimbus cloud देखा जाए then monsoonal rainfall break in monsoon ब्रेक क्या कहुए मानसून चलुची बट हठात गोटे सप्ताह 10 दिन रेनफॉल होनी भाव मानसून चलती से भीतर थरे थरे एमती हुए नहीं 10 दिन 15 दिन वर्षा नथिबा ताकू कहुए मानसूनल ब्रेक आंसर मन कहबो मानसून टाइम रे इफ द मानसून सीजन इज गोइंग ऑन इन बिटवीन इफ देयर इज नो रेन फॉर द वीक लॉन्ग दैट टाइम वुड बी कॉल्ड एज द मानसूनल ब्रेक retreat monsoon means what how monsoon is returning monsoon केमते retreat करूची जेम तुमको कहली monsoon return start from Rajasthan ए टू return start करे है ना monsoon रो onset and advance of monsoon onset तो मु तुमको कहि देची है ना केरला ऊपर आसे है ना तो obviously it would be केरला रे onset करे अब धीरे राजस्थान रे लास्ट रे पहुंचे ध्यान से मन को केरला रे फास्ट पहुंचे राजस्थान रो थार डेजर्ट रे लास्ट रे मानसून पहुंचे बट थार डेजर्ट रु जल्दी विड्रॉल करे ध्यान से मन को अगेन आई रिपीट
लास्ट पहुंचे राजस्थान थार डेजर्ट रे जल्दी विड्रॉल करे थार डेजर्ट रे सेथि पे सेठी ओनली 15 दिन वर्षा हुए 15 दिन रे केते बार रेनफॉल हो दैट इज व्हाई दैट रीजन इज डेजर्ट because rainfall duration is only 15 days only what 15 to 1 month and that to be less than 25 centimeters of rainfall that is why the Thar desert is there okay fine everyone एटी देख तुम जुलाई 15 मुझे तुमको कही बाय जुलाई 15 एठू पहुंचे हियर इज रिटन जुलाई 15 आउ ठीक अगस्त अगस्त बेलू विड्रॉल कर दो अगस्त 15 बेलू 1 मंथ और 1 मंथ भितर ओनली 25 सेंटीमीटर रेनफॉल ए रीजन रे हुए बाकी हुए नहीं now here is you can see Bay of Bengal branch this would be Arabian branch रे एटा गुजरात पार्ट एटा महाराष्ट्र एटा केरला पार्ट ये होची तमरो ये एंट्री करके जाए दीटा ब्रांच कोठी मीट करे उत्तराखंड ध्यान से सुनबो अगेन आई रिपीट उत्तराखंड इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ब्रांचेस ना टू ब्रांचेस एमते गांगटे प्लेन हे कि जीवो कने आडू को जाई परबनी बिकॉज़ ऑफ हिमालय को क्रॉस करके जाई परबनी एमते मूव करिवो एंड पंजाब हरियाणा उत्तराखंड दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ब्रांचेस अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ओके फाइन एवरीवन एठू कहीं एमिति बंके की जाउचंती because here is the Arakayoma and northeast mountain अछि एठी कोन माउंटेन सब अछि Arakayoma mountain तण करी एमिति जीवो एठी स्ट्राइकिंग हे कि डिफ्लेक्शन हे कि जीवो आ बुझा पड़बने का को is it fine to all here is Arakayoma mountain here is what Arakayoma mountain बुझि पड़छ एटा तो हिमालय रही छि एमिति माउंटेन सिस्टम so let's say wind is moving like it would be deflected towards this region okay so it would be deflected Bay of Bengal branch और डिफ्लेक्शन है कि ओडिशा को आसे डन ये देखो बस तो ये रहबो तुमरो दिस मच हियर इज द एटी तुमको देखो एटी आराकायोमा लिखा है जी हियर यू कैन सी द आराकायोमा इट विल मूव लाइक डिफ्लेक्टेड एंड हियर इज द मीटिंग पॉइंट पंजाब हरियाणा उत्तराखंड दिस आर द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू ब्रांचेस आर गोटे ब्रांच एमिति मूव करि जाय इट विल डिवाइडेड बे ऑफ बंगाल ब्रांच एमिति इसला इट विल डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स ब्रेकअप मानसून तुमको कही दीची ब्रेकअप मानसून कहले जदि किछि दिन पई वर्षा न होला दैट पीरियड वी विल टॉक अबाउट द ब्रेकअप मानसून देन पोस्ट मानसून अक्टोबर हिट तुमको क्वेश्चन पचारि पारे मानसून विड्रॉल कला परे पुनी टिके गरम लागे जेमति एई टाइम रे राति रे टिके गरम लागे तो सेथि में ताको कहजे अक्टोबर हिट है ना कोन पई ना मानसून हेला बेले मेघ थाए मेघ हेले खरा कम आसीबो सो हमको कोन टेम्परेचर कम रहिबो जेमिति तुरंत मानसून विड्रॉल करूची तुरंत हीट बढ़ी जीवो ताको कहै छै अक्टोबर हीट कारण अक्टोबर मास रे है ना नामन रहिबो नेटा ओके सो डन दिस वन इथला तमर पूरा मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून केबे आसे अक्टोबर रु डिसेंबर रहबो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना नॉर्थ ईस्ट मानसून तमर नॉर्थ ईस्ट मानसून तो जानि छ तमे नॉर्थ ईस्ट मानसून कोठी अधिक नॉर्थ ईस्ट मानसून कोठी स्ट्राइक करे चेन्नई ध्यान से मन को नॉर्थ ईस्ट मानसून विल स्ट्राइक द चेन्नई है ना जो हमें रिट्रीटिंग मानसून बा जहा को हम कहै छै नॉर्थ ईस्ट मानसून एक मिनट नॉर्थ ईस्ट मानसून तो नॉर्थ ईस्ट मानसून कोठी स्ट्राइक आरो कोन ना नवंबर डिसेंबर थाए इट वुड बी अक्टोबर टू डिसेंबर जनवरी जे नॉर्थ ईस्ट मानसून थाए सबटो अधिक वर्षा हुए तमिलनाडु कर्नाटक केरला ए रीजन रे मानसून वर्षा अधिक हुए एंड दैट टू बी व्हाट चेन्नई इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट जेमति केरला होची तमर साउथ वेस्ट मानसून पे स्ट्राइकिंग पॉइंट चेन्नई होची नॉर्थ ईस्ट पे स्ट्राइकिंग पॉइंट ध्यान से मन को आंध्र प्रदेश केरला कर्नाटक पुडुचेरी दे रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ साउथ सॉरी नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना दिस इज ऑल अबाउट द मानसून तो आज हमें देखले ट्राइबल एंड मानसून को देखिते आर है ना यार मु तुमको दे देबी आज है ना ओके एक मिनट वे मु तुम को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम अच्छे डिस्कस करी जार जहाँ प्रॉब्लम अच्छे डिस्कस करी एक मिनट